Welcome to you all. Today we'll be starting a new series for solving the PYQs of linear algebra. We'll be going in backward direction from 2023 to 2013. So 2013, sorry. So we'll be moving backward in, like 2023, 2024 to 2021, like that. The first question that comes up is span. The three vectors have been given, and we have to find out does this vector is being spanned by the v1, v2, v3. So what does it mean to be spanned? Like मतलब क्या होता है कि कोई वेक्टर स्पैन हो रहा है या नहीं. अगर हम a v1 प्लस b v2 प्लस c v3 v4, अगर हम v4 को, जो कि ये वाला वेक्टर है, अगर if we can represent this vector v4 into linear combination of earlier three vectors v1, then we would say that v4 is being spanned by these three vectors v1, v2 and v3. So we have to find out this thing only. So we'll be putting if only, then only v4 is spanned by v1, v2, v3. So let's do a quick calculation. So v1 is nothing but 2 minus 1, 3, 2. v2 is minus 1, 1, 1, minus 3. We need to be careful while putting the values. Many times मैं गलती कर देता हूँ इसमें. I think we are done. And v4 is nothing but 3 minus 1, 0, minus 1. Yeah, I think we are correct. So let's simplify it and taking the terms like if we simplify it, it will come out to 2a minus b plus 3c is equals to 3 minus a plus b 9c is equals to minus 1. A B sorry I think 2 minus 1 3 B क्या है ये? Yes, I think we are right now. Yeah, it's fine. Minus a plus b plus c, yeah, 3a plus b plus 9c is equals to 0. 2a minus 3b minus 5c is equals to minus 1. Yeah, now we have to solve for ABC using these four equations. So what we'll be doing, let's say 1, we'll call it as 1, 2, 3 and 4. We'll be eliminating the terms. Like if we add 1 plus 2, it will give us a, this b cut jayega, cancel ho jayega, will be get 2c, would be get 2, call it 5. Yeah, it's fine. Now what we can do again, now get a and c relation from this equation 4, 3 and 4. So what we'll be doing here, so if we multiply 3 को 3 से, then it will give out 9a plus 3b 27c. Again if, and this is 6, अगर हम 4 और 6 को ऐड कर दें तो it will give something like this. Okay, b कैंसिल हो जाएगा, 4 और 6 को ऐड किया हमने तो 11a, b कैंसिल हो गया,
plus by c is equals to -1. क्या इसको 7 बोल दिया. Okay, now what we'll do here, I think we are correct. Yeah. Now again what we'll do to 5 equation को multiply करने 11 times से, तो it will give out to be 11 22 c 11 दूना 22. Yeah. But here we see that these same equations is there, same equation, but RHS gives two different values. How it will be possible? So this two equation, so equation 7 and equation 7 and 8 are inconsistent. So equations 7 and 8 are inconsistent. So that's why there is no real values in the real V. There is no ABC belonging to R cube such that AV1 plus AV2 PV2 plus CV3 is equals to V4. That's why V4 not spanned, is not spanned by V1, V2, V3. Yeah, I think wrong. I think we are correct here. Yeah, this is that this हमें ये prove करने को बोला था, and we saw that since it is not being cannot be represented in linear combination, so it is not spanned by V1, V2, V4, V3. So moving ahead, so we have to find the rank and nullity of the linear transformation that is given. So nullity is nothing but nullity of T is nothing but dimension of null space. Of T. So null space of T, let's say call it nullity का representation is like this. Nullity of T. Yeah, I think this is the representation. Nullity of T. Nullity. Dimension of null space. The null space of T. Dimension of, this is null space. Null space of T is nothing but all those alphas belonging to R cube such that T of alpha gives 0. This is the definition of nullity, null space, sorry. So what we'll be doing, so alpha is nothing but alpha 1, alpha 2, alpha 3. So if we substitute here, alpha 1, alpha 3 is equals to 0, alpha 1, alpha 2 plus twice of alpha 3 is equals to 0, twice of alpha 1, alpha 2 plus thrice of alpha 3 is equals to 0. Now what we can do here, this is called 1, this is called 2, this is called 3. If we subtract 2 and 3, we'll be getting some relation. So what relation we'll get? 2 minus 1 will give out to be alpha 3 plus alpha 2 is equal to 0. Then alpha 3 is nothing but minus of alpha 2. This is equation 4. If you put this equation, put equation 4 in equation 2, we'll get as alpha 2, alpha 3 को डाल दिया minus of twice of alpha 2.
0. So alpha 1 is equals to alpha 2. So this is the relation that we got, and I hope the equation 3 is also getting satisfied. तो ये 3 हो जाएगा, ये equation 3 is also getting satisfied. Also equation 3 is satisfied. Equation 3 is getting satisfied. Now what we can do here, so the alpha is alpha 1, alpha 2 is nothing but alpha 1, alpha 3 is nothing but minus of alpha 2 is minus of alpha 1. So is alpha 1 minus 1. Okay, so alpha, so t of nullity of t is nothing but alpha 1 minus 1, alpha 1 belongs to R. So the only one linear independent expression in n of t, the dimension of n of t, nullity of t is nothing but is equals to 1. This is the equation, this is the thing that we got, and now we have to find the rank too. So we'll be using rank nullity theorem. Otherwise we can also show that we can find the rank of this expression, and through that also we will be taking that into echelon form, and by using the non-zero rows we will be getting the rank of that expression. Also rank nullity theorem will be easier because we'll be not be taking the expression, the matrix into row echelon form, so that will be saving our time. So directly using rank nullity theorem, the dimension of range is nothing but rank plus nullity is nothing but dimension of u. Dimension of u is nothing but this term r cube का dimension is 3, r into r into r, so rank is 3 minus 1, because basically rank is 2. This is the answer. So moving ahead to the third problem. So इसमें बोला है कि लाइक हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस दिस वाला, एंड मैट्रिक्स इज दिस. तो हमें बताना है कि अगर हमने आर क्यूब का बेसिस ये सब मान लिया तो मैट्रिक्स क्या होगा. So it's a very kind of a particular modus operandi that we need to follow in such kind of problem, a particular series of actions that will lead us to final solution. तो इसमें क्या करते हैं, क्या है कि like we have been given that let's first call it e1 is nothing but 1,0,0. हमारा लाइफ आसान हो जाएगा बिकॉज हम लोग सिर्फ e2, कई बार इसकी जगह पे सिर्फ हम लोग e2 बोल देंगे. इट विल बी सेविंग आवर टाइम. Okay, so matrix is given as this wala matrix. So t e1 is nothing but, mind it that row वाला term column वाला term multiply करेंगे, तो 1 e1 minus 1 e2 0 e3 comes out to be ये तो 0 हो जाएगा. 1 यहाँ से -1, yeah, t e2 भी similarly will be writing as 1 2 1. t e3 similarly will be writing as same वही चीज़ कर रहे हो केवल 1 e1 plus twice of e2 plus 1 times e3. Similarly 2 1 3. नाउ अब हम क्या करना है कि बेसिस हम चेंज कर दिया. बेसिस अब ये नहीं है, these are not basis for the next matrix. Basic is nothing but these wala terms. So now now new basis is
b1 बोला इसे, b1 1 comma 1 comma 1, b2 is nothing but 0 comma 1 comma 1, b3 is nothing but 0 comma 0 1 comma 0 comma 0 comma 1. Now what we'll be doing here, yeah, that's great. So we'll be moving ahead now. For a general for general ABC belonging to RQ, so transformation of A B C would be T of A, सॉरी पहले ऐसा लिखते हैं, A B C would be nothing but A times E1, B times E2, C times E3. So linear transformation लगाया तो transformation we know that it will come out to be A times T E1, B times T E2, C times T E3, because we know transformation of A alpha B beta is nothing but A T alpha plus B T beta. This we know. So इसी का यूज़ करेंगे अपन आगे बढ़ने के लिए. So T of ABC. So T now we'll be finding with respect to new bases कि क्या आता है. So T of क्या आता है, तो विल बी सीइंग हमारा बेसिस, नया बेसिस इज 1 1 1 1 1 1. तो विल बी सीइंग एट तो 1, तो यहाँ पे आएगा टी E1, टी E2, टी E3. तो it will be applying this term 1 1. It will come out to be 1 2 4 yes, -1 1 2 4. This will become T1 1. Now we have to find for the next basis 0 1 comma 1. So it will entirely become T E2, T E3. तो T E2 T E3 को जोड़ देंगे अपन, T E2 T E3 3 3 4 3 3 4 E2 E3 T E2 T E3 3 3 4. Now नया बेसिस ये है, इट इज़ नथिंग बट T E3. T E3 इज़ नथिंग बट ये वाला टर्म 2 1 3. या अब हमने क्या करा कि वी हैव calculated the table at values at the new basis. Now we have to represent these terms into new basis. New basis is nothing but these wala terms. New basis is nothing but these terms. So now say x y z belongs to R cube. So now representing these terms हमको अब इसको अब नए वाले बेसिस के फॉर्म में लिखना है. तो we are representing just a general x y z in terms of kind of new basis. So we term it as alpha b1, beta b2, gamma b3. Great ahead. Now what we'll be doing, okay yes. So अब क्या करते हैं कि basis we know alpha b1 is nothing but 1 1 1, beta is nothing but 0 1 1, gamma is nothing but 0 0 1, x y z.
x come out to be alpha, yeah, x is alpha, y is, I think we are correct. 1 1 1, yes, अल्फ़ा हमें पता चल गया, yes, y will come out to be alpha plus beta, yes, z will come out to be alpha plus beta plus gamma. तो अल्फ़ा यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्फ़ा x है, बीटा विल कम आउट टू बी अल्फ़ा y माइनस अल्फ़ा y माइनस x, अल्फ़ा बीटा गामा विल कम आउट टू बी z minus alpha, z minus beta. Alpha is nothing but x, beta is nothing but minus y plus x. z minus y, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो x y z is nothing but alpha x 1, इसको b1 लिखे, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फ़ा b1, बीटा is nothing but y minus z is b2, gamma is nothing but z minus y is b3. Now t of b1 was nothing but t of b1 4 to 4, 4 या 4 to 4, 4,2,4. सो अब रख देते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा की जगह पे x आएगा. अब if you put these value here, what will get? So 4 की जगह पे 4, y z minus 2, t b2 3 3 4, 3 b1, y minus z is minus b2 here, and z minus y b3, t b3 2 1 3 would be 2 b1, y minus z is minus b, is 2b. Okay, and z minus y is 2b, b3. I hope we are not wrong anywhere. T2 is nothing but 1 minus 1 1 2 1 2 1 3, and 1 1 1 1 1 1 4 2 2 4, ठीक है, 2 4, T2 3 3 4 3 3 4, yes, T3 2 1 3, yes, we are not wrong, this is correct. Now we also did the same, we also did the correct thing. So beta will be y minus x, gamma would be z minus alpha minus beta, alpha is nothing but minus y plus x is z minus y, x, beta is y minus x, this is y minus x, z minus y,
the entire thing will go wrong if we do it like this. Yeah, so if we reduce it तो अब बन जाएगा 4 माइनस 2 एंड जेड माइनस 2, अब बन जाएगा ये 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड 1, देन इट विल बिकम -1, then will become 2. Yeah, so now matrix T with respect to basis B is ऐसे 4 - 2 2, इन सबको ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे, 3 - 1 3 0 -1 2 1, z minus y will come out to be 1. I think we are not wrong anywhere. Z minus y 3 3 4 3 3 4 2 1 3 3 3 4 2 1 3 4 2 4. Yeah, z minus y 2 1 2. Now this is the matrix that we need to get. Now we have to say this thing. We have to prove that verify the Cayley-Hamilton theorem for the matrix. So we can also we can state Cayley-Hamilton theorem. We know the Cayley-Hamilton theorem is nothing but, you know, what Cayley-Hamilton theorem says that matrix satisfies it characteristic equation. Let me write in complete form it. Characteristic equation. So file enough. So the matrix of A minus lambda I would become the characteristic equation 1 minus lambda 0 0 1 minus lambda 1 0 1 minus lambda. It will become to be 1 minus lambda square minus 1. अब वहाँ पे 0 हो गया, तो the characteristic equation is lambda square minus 1 minus lambda cube plus lambda, so 0. Plus lambda square plus lambda. This is the term, this is the equation that we got, and now we, as per the Cayley-Hamilton, so it will be satisfied by matrix, matrix A. So we can write it as A cube is nothing but A square plus A minus identity matrix. So this is the thing that we have to say, and verify the Cayley-Hamilton theorem for matrix. Now like we have to find A cube, A, and all these in order to show this that this is getting satisfied. So it will be a tedious come, but we will have to do it. So now A square is nothing but 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0. Now this 1 0 1 cancel, 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0. Yes, this is a square. I will have to show. We also find a cube. A cube is nothing but a into a square. A we know 1 0 0 1 0 1 0 1 0. A square is nothing but 1 0 0 1 1 0 1 0 1. Now if you do this, R1 C1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 this will become 0. I think we are correct. 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0. Now yeah, R1 0. Yeah, this is a square, a cube. Now we have to say this so that now RHS में क्या था? A square minus a square plus a square plus a minus iota minus identity. Okay. 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0. So it will become out to be 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 0, which is nothing but A3. Hence satisfied. Hence Cali Hamilton gets satisfied. Yes. Now दूसरा वाला part, we have to show this that a raised to the power n. So we have to show a की power n, a n minus 2 a square minus iota, minus identity, iota yeah, for n greater than equals to 3. For n greater than equals to 3, we know from 1, इसको 1 बोला अपन ने, from 1 we got a cube a square plus a minus 1. Now if इसको पूरा दो, put n equals to 3 in equation 1, then it will become a cube a square minus I. Hence for n equals to it is satisfied, because हमने जो पाया था a से और वो 2 से पाया वो मैच कर रहा है, it is satisfied.
Now, so say this say a n प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे n माइनस टू ए स्क्वायर माइनस आई इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k. तो इट विल कम आउट टू बी ए के माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए के माइनस टू ए रेज़ टू द पावर ए स्क्वायर माइनस आई से इज ट्रू फॉर k. ठीक है. Now what we'll be doing here, so a cube, now for n k plus 1 a k plus 1 would become a k की power k, so it will become a k minus 2 a square minus I. Yes, so a k minus 1 a cube minus a. अब we'll be putting a cube here, a k minus 1 a cube में पता है from 1 a square a minus I minus a, this will get cancelled, so a k minus 1 a square minus I a k plus 1 a k plus 1. Yeah, hence this is it is also satisfied. So for n equals to k plus 1 it is also satisfied. And therefore by PMI, principle of mathematical induction, we can say that for all n greater than 3, for all n greater than 3 a raised to the power n is equal to a n minus 2 a square minus I. Yeah, so हमें ये प्रूफ करना था and we got it. Now the second part is इसका ही a 40 पे निकालना है, a raised to the power 40. So we know that a cube is nothing but a square प्लस a माइनस आई. a की पावर हम 4 निकालते हैं, a की पावर 4 इज इक्वल्स टू a क्यूब a स्क्वायर माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया, a क्यूब हमने डाला यहाँ पे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, a से कैंसिल माइनस आई, a की पावर 4, a की पावर 6 निकालेंगे तो a स्क्वायर a की पावर 4 a स्क्वायर इज नथिंग बट a की पावर 4 इज नथिंग बट 2a स्क्वायर माइनस आई 2a क्यूब a की पावर 4. I think we are correct. a की पावर हमें पता है a क्यूब a की पावर पता है हमें 2 स्क्वायर माइनस आई. इसको अपने 1 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, फ्रॉम 3. एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा अदरवाइज नंबर कट सकते हैं. 3a square minus 2i. So it will become something like this. So पैटर्न लगता है हमें कि ऐसा पैटर्न आया था इस टाइप प्रॉब्लम में 3a2 minus 2ai. So pattern is something like this: a n by 2 a square n minus 1 i. So a की पावर 40 is nothing but 20 a square माइनस 19 आई. तो a हमें पता है, i पता है, वी कैन फाइंड इट आउट. a रेज़ टू द पावर 40 20a स्क्वायर निकाला था हमने 100 110 101. आसान नहीं रहेगा. 100 110 101 100 110 101. Just easy to just in order to retain it. 19 1 1 1 0 0 0 0 0 0. तो कुल मिला के ये हो जाएगा 20 1 20 नहीं है 20 इस
91 00 20 0, ये भी 20 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. Yeah, this is that all we got here. 20 20. Okay, yeah, I think we are good to go here. Yeah, this is the answer. Now coming to the fifth problem. Find the rank of the matrix using by reducing to row reduce echelon form. तो reduce echelon form का हमें steps पता होना चाहिए कि वो reduce echelon form होता क्या है. So in order to do this we have to follow steps. तो बताता हूँ कैसे follow करते हैं. तो let's say A is nothing but 1 2 minus 1 0 minus 1 3 0 minus 4 2 1 3 minus 2 1 1 1 minus 1. तो रो रिड्यूस इकोनॉमिक फॉर्म बनाने में हमें ये जो लास्ट रो होती है उसको जीरो बनाना पड़ता है. तो फर्स्ट स्टेप जीरो बना रहे हैं अपन. तो क्या करते हैं कि R4 को R4 माइनस R1 कर देते हैं, R3 को R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कर देते हैं, R1 को R2 को R2 प्लस R1 कर देते हैं. बिकॉज ये जो भी ये नॉन because let's see I will be describing in the next steps. तो इसको जीरो क्यों बना रहे हैं कि हमें जो लीडिंग पिवट के जो पहले जो भी होता है उसको जीरो करना पड़ता है in order to make it in row reduce echelon form. And also like हमें रो रिड्यूस इक्वलेंट फॉर्म चाहिए. तो ये जो डायगोनल है मेन डायगोनल के अंदर ये भी सारे उसके जीरो बनाना पड़ता है. I will be describing all these in the next few steps. So R2 को हमने करा R2 प्लस R1, इससे कुछ हो जाएगा. इससे क्या होगा तो R2 प्लस R1 करा तो ये जीरो हो जाएगा. 1 2 माइनस 1 0, ये 0, ये 5, आई थिंक वी आर करेक्ट. बस जो हो रहे हैं कि -1 ये 4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो इसको 2 हो गया, ये 2 4 -3, ये 5 हो जाएगा. दिस विल बिकम -2. दिस विल बी जस्ट रिड्यूसिंग -1 2. अब इसे -1 कर दिया. नाउ हियर व्हाट वी डू, ना यहाँ क्या करते हैं कि हमें ट्राई करना है कि ये वाला जो बॉटम मोस्ट रो है उसको जीरो बनाना है. जितना जीरो एलिमेंट बना सकते हैं उतना बनाना है. सो व्हाट विल बी डूइंग है, सो वी कैन ऑल्सो इंटरचेंज द रोज, क्योंकि घटाने में आसानी होगा. ये क्योंकि ये बड़ा टर्म है तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू डू elementary row operation if we had 1 here. Otherwise we will have to divide this 5 by 1 by 5 and not to make the coefficient 1. तो बहुत सारा मतलब fractions terms आ जाएंगे, तो we can avoid it. So what we do here, so interchange 2 with respect to 2 and 4. तो interchange करने पे कुछ ऐसा आ जाएगा 1 2 minus 1 0 0 minus 1 2 minus 1 0 minus 3 5 minus 2 0 5 minus 1 minus 4. अब यहाँ ये क्या करते हैं कि R3 को करा, R3 माइनस, पहले तो मल्टीप्लाई कर दिए इसे, पहले R2 को क्या कर देते हैं कि R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो it will become plus. Okay, now what we do here, R3 plus 3 times of R2
R4 इज़ नथिंग बट, R4 को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया कि R4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2, हमें 0 बनाना है, लास्ट रो हमें मैक्सिमम ट्राई करके 0 बनाना है। तो अब हमने 0 इसको 5 से मल्टीप्लाई करके करा तो ये 0 हो जाएगा, इसको 10 ये 9 हो जाएगा, दिस विल बिकम आउट टू बी -9। आई थिंक वी आर करेक्ट। R4 माइनस -5 या -9। ओके, अगेन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, -1, 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, यस, दिस विल बिकम 0 1 -2 1 1 2 -1 0। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, R4 को ट्रांसफॉर्मिंग R4 टू R4 4 टाइम्स, 9 टाइम्स, R3, तो इट विल बी रिड्यूस टू 0, 0 0 एंड R3 को नाउ ऐसा करने के बाद R3 को मल्टीप्लाई कर दिया R1 से, क्योंकि पिवट सारे 1 बनाने हैं, रो रिड्यूस। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हियर, व्हाई आई एम डूइंग हियर, this is something like this will become something like this, 0 1 -2 1 1 2 -1 0। सो जो इधर से जाते वक्त जो सबसे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उसको पिवट बोलते हैं। तो पिवट इन रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म इज शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाइड हियर। सो नाउ इन ऑर्डर टू गेट रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म, सो जो भी पिवट होता है उस वाले कॉलम में दैट शुड बी ओनली नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो दिस इज पिवट, दिस शुड बी ओनली बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन दिस कॉलम। सो व्हाट वी कैन डू हियर, सो ये पिवट है तो इसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि इन रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म in any particular column pivot should only be the non-zero term. तो C2 तो R1 को क्या करा, R1 को R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 ट्वाइस ऑफ R2, तो ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली यही स्टेप्स कर रहे हैं ताकि मतलब हमें सारे कॉलम्स में सिर्फ पिवट ही हो जो कि नॉन ज़ीरो हो। अगर ये करा तो ये 2 से 0 हो जाएगा, 0 1, ये -2 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको करा तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि नहीं 3 चला जाएगा। इसको डबल करा, -4 I think we are correct. Yes, ये ठीक है, 0 हो गया। इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा ये। यस, 0 -1 1, इसको डबल से करा तो ये -2 हो जाएगा। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग एनीवे। यस, नाउ again we'll be doing the same thing here. 1 1 0 1 0 0। अब करा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर दिया, 0 1, तो ये 0 हो जाएगा। 0 -1, ये 2 से -1 हो जाएगा। अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो जाएगा। अब इसको ये 1 हो जाएगा। करा क्या हमने कि इसमें हमने क्या करा कि जो रो 1 को करा, रो 1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 3, बिकॉज इस वाले जो कॉलम में, जो पिवट वाले कॉलम में, दिस वुड बी ओनली नॉन ज़ीरो टर्म, बाकी सारे टर्म 0 होने चाहिए। इसमें तो पिवट है ही नहीं, 0 है, तो इट विल बी रिमेन एज इट इज़।
R2 को हमने क्या करा, R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा. यस, तो दिस इज द फाइनल यूनिक रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म. सो नॉन ज़ीरो रोज होंगे, द नॉन ज़ीरो रोज, द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज is 3, is rank of matrix. yes, हमें हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि ये रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म इज यूनिक फॉर एवरी मैट्रिक्स, while echelon form is not unique. Row reduced echelon form is always unique for a particular kind of matrix. So we are done. Thank you all.